Good morning students, welcome back to our online classes. Today we are going to discuss about our social science in geography part, that is chapter number 11, components of the environment and interrelationship. Earth is the only planet in the solar system that has received the gift of natural environment. If environment has not been there, we would not have existed. Human life is throbbing. Throbbing means धड़कना because of the environment. ह्यूमन लाइफ जो भी है चल रही है वो ओनली और ओनली किसकी थ्रू चल रही है, तो एनवायरनमेंट के थ्रू चल रही है. एनवायरनमेंट इज द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ सेवरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसेस. ये जो एनवायरनमेंट है वो ड्राइविंग फोर्सेस है, मतलब प्रेरक शक्ति है सारी डेवलपमेंट की जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती है उसकी. द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग कवर्ड. द एनवायरनमेंट इज द कवर ऑफ नेचुरल कंपोनेंट्स around the earth. You know very well, the environment is covered with the various natural components. The environment is made up of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Components of the environment. The environment is made up of four main components. These four components include lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. You have studies about these four components in standard 6. Let us briefly understand about it. Important question here. Which how many components in our environment? So there are four components in our environment, and which are they? So they are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. First of all, we learn about lithosphere. Lithosphere is the solid crust or hard top layer of the earth. Then now important point here, what is lithosphere? Then lithosphere is the solid crust or hard top layer of the earth. It is composed of rock and minerals and is covered by thin layer of soil. Now important question here, how can the lithosphere made up? So the lithosphere is made up with rocks and minerals and covered with a thin layer of soil. Lithosphere has multiple utility, like it provides land for human settlement, agriculture and raw material for industries. तो लिथोस्फीयर से हमें बहुत सारे मल्टीपल यूटिलिटी में आती है, यूज में आती है. इससे हमें शेल्टर मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिलता है, इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है. तो इस तरह से लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Hydrosphere. The low-lying area of the Earth's surface is surrounded by water. It is known as hydrosphere. What is hydrosphere? The low-lying area of the Earth's surface is surrounded by water. It is known as hydrosphere. It is composed of various sources of water like ocean, sea, lake, river, etc. It is essential for all living organisms. Oceans are also rich in of various resources. वाटर बॉडीज़ में जितने भी आते हैं, ओशन, सी, लेक, रिवर्स, ये सभी आते हैं इसके अंदर. और वाटर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी इसेंशियल है. बिना वाटर का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है. और सबसे ज़्यादा विशाल वाटर का रिसोर्स है ओशन, जो आप यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. 71% वाटर बॉडीज इज कवर्ड विथ oceans. Atmosphere is the layer of air that surrounded the earth. What is atmosphere? So atmosphere is the layer of air that surrounded the earth. Atmosphere is made up of various gases. How can the atmosphere made up? So the atmosphere is made up with various gases, and they are water vapor, dust particle, alines, etc. It protects life of
on the earth by absorbing sun's harmful ultraviolet rays. Important question here, how can the atmosphere protects life on the earth? So by absorbing sun's harmful ultraviolet rays and product life on the earth. We can hear sound through atmosphere. हम एटमॉस्फेयर की वजह से ही साउंड को सुन सकते हैं. वी आर थैंकफुल टू एटमॉस्फेयर फॉर मेकिंग अस एबल टू हियर साउंड थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग लाइक रेडियो टेलीविज़न एंड मोबाइल फ़ोन. हम एटमॉस्फेयर ने शुक्रगुजार है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं. एयर रेडियो टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? तो एटमॉस्फेयर की हेल्प से. सो वी आर थैंकफुल टू बायोस्फेयर. द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लाइफ इज प्रोविजर इज कॉल्ड बायोस्फेयर. प्रोविजर मीन्स व्यापक और बहुत ज़्यादा. इट इंक्लूड्स फ्लोरा एंड फौना मीन्स वनस्पति एंड जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर में फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग सभी इंक्लूडेड हैं. लिविंग बींग्स obtain food and other necessity from biosphere. You know very well that all living beings need food and other necessities things from biosphere. There are two main types of environment. Important point here, how many types of environment? Two types of environment. Which are they? They are natural environment and man-made environment. Natural environment includes biological, biotic means jaivic components like flora and fauna and human beings. You already know. Inorganic or abiotic means ajaivic components are like land, water, air, etc., which are inorganic or abiotic components. So land, water, air are inorganic or abiotic components. A man-made environment is created by human. Man-made जो भी है environment उसे ह्यूमन ने क्रिएट किया है. इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि एंड इंटरेक्टिंग विथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जो जैविक एंड अजैविक कंपोनेंट से इंटरेक्ट हैं. मेन मेड एनवायरनमेंट. मेन इंटरेक्ट्स विथ सराउंडिंग एनवायरनमेंट. मेन अपने एनवायरनमेंट को सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट है. ही मेक चेंज इन इट अकॉर्डिंग टू हीज नीड. वो अपनी नीड की अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं. इन एशियन टाइम्स men lived a nomadic means not fixed life. They were wandering here and there, you know very well. Life and adapt the environment according to his own needs. His life was simple and his needs were limited. So all his needs were met from the सराउंडिंग एनवायरनमेंट. लोग सिंपल लाइफ रहते थे और उनकी जो नीड होती थी वो भी आसपास के एनवायरनमेंट से ही पूरा हो जाता था. एज द टाइम पास्ट चेंज अकर्ड एंड नीड्स ऑल्सो इंक्रीज. टाइम जैसे जैसे बीतता गया नीड्स इंक्रीज होती गई. मे लर्न हाउ टू यूज एंड चेंज द एनवायरनमेंट. एज अ रिजल्ट प्रोड्यूशन इंक्रीज्ड, जिसकी परिणाम स्वरूप प्रोड्यूशन इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर में. एंड एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स को पालने लगे. ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ व्हील्स एंड इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन. यू नो वेरी वेल दैट्स द invention of wheels play an important role in human life. This man-made environment is also known as cultural environment. Important point here, the man-made environment is also known as cultural environment. Okay.
Distribution of water, it means if we see our earth and our earth has 71% of water, that 70% of earth is having water, means hydrosphere water bodies. Like now, from that we have learned about oceans. These are four types of oceans, right? That is Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and Arctic Ocean. Four types of ocean. Again, I am repeating: Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and Arctic Ocean. Now, these four oceans are interconnected with each other, but as ocean bodies water are slightly, it means that is salty, so we cannot use that water that for drinking purpose. It has been purified and then we can use it. We can't directly use it. Now, from where we can get fresh water? We can get fresh water from lake, from river, from wells, and underground water, right? From that also we can get pure water, right? So from these way we can get pure water. From other sources of pure water, oceans are the main source of the water. So if this way we learn about distribution of water, in this way the water is distributed. Now 71% of earth has water bodies, that also you know, and it is very important. Here a table is given to you. It helps you to know how water is distributed in our environment. Okay. Sea waves arise from various forces. Normal waves are created by the wind blowing over the sea surface. High waves are formed by whirling wind, means bounder, or storm, means andhi. When these waves reach the coast, they causes heavy damage. जब ये थ्रॉयल विंड और स्टॉर्म, बवंडर और आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है. एंड इप्स, ट्वाइस अ डे सी लेवल राइज एंड फॉल्स पीरियडिकली. सी का वेव समय समय पर दिन में दो बार बढ़ता और घटता है. दिस फिनोमिना ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी इज कॉल्ड टाइड एंड इप्स. इस फिनोमिना की वजह से ज्वार उठता है सी में. एट द टाइम हाई टाइड सी वाटर बगल टूवर्ड्स द source, while at the time of ebbs the sea water returns to the sea from the. इसकी वजह से जब ज्वार उठता है तो सी का वाटर शोर तक आती है, और जब इब्स होती है तो वाटर अंदर चला जाता है. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइड्स इज अबाउट 12.25 आवर्स. टाइड की उठने में 12 hours 25 minutes लगता है. टाइड occurs on the earth due to gravitational force of the sun and the moon. टाइड सन एंड मून की ग्रेविशनल फोर्स की वजह से होती है. द मास ऑफ द सन इज मोर देन द मून बट इज वे far away from the earth, so the gravitational force of the moon is more on the earth. Different part of the earth face the sun, the moon at different time. Two tides also come at different times. On the day of new moon and full moon, the sun, the earth, and the moon comes almost in a straight line. These conditions result in high tides. But when the moon is in its first and last quarter, the gravitational pull reduces, resulting in low tides. जिस दिन फुल मून डे होता है उस दिन ये जो अर्थ है, मून है और सन है, वो तीनों एक ही रेखा में होती है, जिसकी वजह से ये टाइड जो होती है वो यानी ज्वार बड़ी बड़ी होती हैं. और जिस दिन मून का रिड्यूस होता है उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है. Current, like the rivers on the earth, the oceans also have huge amount of water flowing in certain directions. For thousands of years these currents are called ocean currents. रिवर के जैसे ही ओशंस वाटर बॉडीज का ह्यूज अमाउंट है जो हजारों वर्षों तक एक ही दिशा में
बहती है, इसकी वजह से एक करंट उत्पन्न होती है जिसे ओशन करंट कहते हैं। दीज करंट आर हॉट एंड कोल्ड। इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, हाउ वाज द ओशंस करंट? तो द ओशंस करंट्स आर हॉट एंड कोल्ड। द मेन कॉजेज ऑफ करंट are solar energy, wind, slanty of sea water, and rotation of the earth. Which are the main causes of current? So they are solar energy, wind, slanty of sea water, and rotation of the earth are main causes. Mostly hot current moves from the इक्वेटर टू द पोल्स। हॉट करंट इक्वेटर से पोल की ओर जाता है एंड कोल्ड करंट मूव्स फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की ओर जाता है। बोथ आर इन ऑपोजिट्स। हॉट करंट्स मूव्स इक्वेटर टू पोल्स एंड कोल्ड करंट मूव्स पोल्स टू इक्वेटर। डोंट गेट confused. Okay. Interrelationship among the components of the environment. Mean is at the center of all components of the environment. The different components of the environment are connected with one another by some physical cycles. These cycles are influenced by human activities, और ये जो activities human cycles के द्वारा होते हैं, main does extensions means खुदाई in lithosphere to obtain minerals. The huge pits means गड्ढे are formed due to excavations. These pits get filled with water resulting in formation of hydrosphere. मेन उत्खनन करके लिथोस्फीयर में गड्ढे बनाए जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोस्फीयर का फॉर्म हुआ। As the temperature in the atmosphere increases, the water in the hydrosphere evaporates and mix with the atmosphere. जैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही वाटर इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। एज द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर कंडक्ट्स क्लाउड्स फॉर्म एंड रेनफॉल्स। जैसे ही नमी संगठित होकर क्लाउड से टकराती है तो बारिश होती है। द फ्लो ऑफ दैट वाटर कॉजेज इरोजन ऑफ सॉइल। पानी की इसी बहाव की वजह से सॉइल इरोजन होता है। एज अ रिजल्ट वेरियस लैंडफॉर्म्स आर फॉर्मेड। इसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। Moreover, various human activities are interconnected with the ecosystem due to components of natural environment. Human beings use their intellect to use various components of the environment of satisfy their needs. Human beings अपनी बुद्धि का यूज करके बहुत सारे needs को फुलफिल करते हैं एनवायरनमेंट से। महात्मा गांधी सेड दैट पोल्यूशन इज द एक्ट ऑफ पॉल्यूटिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। कंपोनेंट्स पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड pollinates. The environment is polluted when resources are used unrespectfully, means अप्रतिबंधित and indiscriminately, means अंधाधुंध। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन तब होता है जब रिसोर्स का अप्रतिबंधित रूप से अंधाधुंध यूज होता है तब। द शार्प जेट्स of human development, industrialization and machinization are responsible for pollution of एनवायरनमेंट। मनुष्य के इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मशीनराइजेशन की तेज इच्छा से ही पॉल्यूशन का कारण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट? तो शार्प जेट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मशीनराइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर pollution of environment. At present, land pollution, water pollution, air pollution and noise pollution are increasing very fast. There are four types of pollution, you know very well. They are water pollution, land pollution, air pollution and noise pollution. Pollution causes an adverse effect on the environment, human life and living things.
We need to take immediately step to prevent the environment and prevent its harmful effects. हम पोल्यूशन को रोकने के लिए इमीडिएट स्टेप लेनी पड़ेगी ताकि इसके हार्मफुल इफेक्ट से हम बच सकें. Pollution. A change in soil quality or its nutrients is called land pollution. What is land pollution? Change in soil quality or its nutrients is called land pollution. It is not easily felt. We don't feel it because we cannot easily see or we cannot easily observe it, because if we talk about water pollution, if we talk about air pollution, if we talk about noise pollution, we can easily felt it, right? But if we talk about land pollution, we cannot easily felt. Now why? Because it used to damage the soil, right? Indirectly it damages us also. Land pollution, it means change in the soil quality. What is change? It changes the quality of the soil. It means soil की जो क्वालिटी है उसका चेंज करती है, यानी खराब करती है. एंड एज इज चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल वी कैन नॉट इजीली फील it, right? But it has many disadvantages. Solid waste of other waste and we used to do in our household waste should are there, right? Or whatever waste we should throw it in the land in our surroundings, so that create land pollution. Disposal of household solid waste or water, setting off of industries on fertilizer of agriculture, and land discharge of condiments waste used in industries on ओपन लैंड. हम अपने घरों से सॉलिड कचरे को पानी में बहा देते हैं और फैक्ट्री की गंदी पानी खेत में जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है. डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट ऑन द लैंड, excavation activities, construction activities, use of chemical fertilizer for agriculture, over irrigation, and over uses of insect acid along with it, as well as use of plastic, are responsible for land pollution. फैक्ट्री की सॉलिड वेस्ट, जमीन का उत्खनन, खेती में रासायनिक खाद का उपयोग, कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग तथा प्लास्टिक आदि लैंड पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. व्हाट कैन वी डू फॉर कंट्रोल ऑन लैंड पोल्यूशन? Insecticide of pesticide and chemical fertilizer. We use chemical fertilizer to kill insects. Pesticides means कीटनाशक. We should use organic and indigenous fertilizer. Green measures should be used. Organic means cow dung. These organic things help us for growing the crops pure. Fertilizer soil, so we should use organic things to grow the crops. Pesticides should be used स्प्रेंगलिंग, कीटनाशकों का उपयोग कम करना चाहिए. सॉलिड वेस्ट शुड बी sorted and reduced. Plastic sold waste should be recycled and reduced. Drip and sprinkle irrigation system should be used in agriculture. Reuse, recycle, and reduce, these three R's are very important. Is resource, first is reuse, second is recycle, and third is reduce. Recycle means it's recycled it again by using the same waste from we can make another good things. Reduce means if we feel that we need to reduce these, for example, reduce of plastic because it is not good for land. It is not easily degradable, you know very well. Now plastic waste, whatever plastic we are using in our day-to-day life, we should recycle it also, that will not create land pollution. Then proper irrigation, we should use many methods for irrigation.
but from that have to use proper irrigation means artificial ways to spending the water on the agriculture on the crops. So we need to proper irrigation method to control land pollution. When water becomes unsuitable for its intense use and external impurify or mixture with it is called water pollution. What is water pollution? So water becomes unsuitable for its intent means waste use and external impurify are mixed with it is called water pollution. Sewage water pollution by industries, leakage of minerals, oil, carries chemicals, fertilizers, and pesticides used in the agriculture are responsible for water pollution. You know very well, sewage water pollution by industries, leakage of minerals, oil, chemical fertilizers, and pesticides used in agriculture are responsible for water pollution. Measures to prevent water pollution. Water polluted by household activities and industries should be disposed of after purification process only. Strictly control should be maintained on disposal of wastewater without processing. Consumption of substances that pollute the water should be controlled. वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूटेड वाटर होते हैं उसे प्यूरिफाई करके डिस्पोजल करें। बिना प्यूरिफाई किए गए वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए कठोर कंट्रोल मेंटेन करनी चाहिए। कठोर पदार्थ को वाटर को पोल्यूट करते हैं उसमें कंट्रोल करनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, emissions of gas or fumes from industries, factories, thermal power plants, etc. into the atmosphere causes air pollution. Now important point here, which are the causes of air pollution? तो emissions means उत्सर्जन of gas or fumes from industries, factories, thermal power plants etc. into the atmosphere causes of air pollution. फैक्ट्री से जो जहरीली गैस उत्सर्जित होती है और वो थर्मल पावर आदि की गैसें वातावरण में जाती है और एयर पोल्यूटेड होता है। एयरबॉर्न पार्टिकल्स सच एज कॉयल पार्टिकल्स यूज एज फ्यूल, हवा के पर पार्टिकल्स जैसे कॉयल पार्टिकल्स जिसकी इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। कार्बोनेशन कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज फ्यूम्स रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। मोरेवर द फ्यूम्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल emit air pollution such as neutrons, oxygen, carbon monoxide, benzopherenes and कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन फैल रहे हैं। बहुत सारी जहरीली गैसों से भी फैल रही हैं। पोल्यूशन इंक्रीज इन द एयर ड्यू टू मिनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। इन सर्टन of solid agriculture waste also increase air pollution, एग्रीकल्चर के वेस्ट को जलाने के चलते भी पोल्यूशन एयर पोल्यूशन। मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन द गवर्नमेंट should form laws and strictly enforces them. In equipments for filtering smoke and toxic gases should be developed. Coal, petrol, diesel, etc. should be used as per requirement only. The use of pollution-free CNG, PNG, solar energy, etc. should be encouraged. Awareness should be separate to travel in public transport. PUC should be strictly enforced for vehicles. गवर्नमेंट को पोल्यूशन रोकने के लिए कठोर कानून बनानी चाहिए। धुआं के हानिकारक गैस को छानने की उपयोग पदार्थ का डेवलप होना चाहिए। कॉयल, पेट्रोल, डीजल आदि का यूज ज़रूरत अनुसार करें।
सीएनजी पीएनजी सोलर एनर्जी का उपयोग इंक्रीज करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी व्हीकल्स में पीयूसी होना अनिवार्य है, ऐसा नियम बनाना चाहिए। Noise pollution, unnecessary, excessive, unbearable sound means noise. What is noise? Noise means unnecessary, excessive, unbearable sound. We know these noise are noise pollution. Sound is pertinent to everyone. The person who loves light music, rock music is noise for him, while it is melodious for a rock music fan. Pollution occur when we use loudspeaker, when we intelligently use horns. These will create what? These will create noise pollution. It means you people are disturbing other. Even lot of noise is coming from machines. So what we need to do? So what precautions we need to take to the precaution we need to take to control noise pollution? It is to avoid the things that is making noise, right? For example, we should service our machines and vehicles on time. If the machine and vehicles are properly serviced, they will not create noise. Other than that, we should, whether if we are having the vehicles, there should be holding everywhere that this is silent zone, no noise please. Such holding should be there. It means it should what? The here we control make noise special. If front of hospital, noise pollution, in front of school, there should be no noise. We should avoid it. Noise? Noise we should not create any noise pollution. Why we should not create any noise pollution? Are noise that pollution. I will sound come to point how we can prevent everyone. The person can who avoid the light DJ music and loudspeaker music in the function, noise, and there should be a strict implementation that after 10 p.m. you cannot play any loudspeaker in the public area. That should be a strict implementation by government. Other than that, what we can do? We should not firecrackers. We should avoid use firecrackers in festivals. Even that creates not noise pollution. Why it is necessary to stop noise pollution? Because it will create a mental effect on someone, gives stress to someone people do not like the noise, someone people like to remain calm and silent. So life will be stressful with lot of noise. We should avoid noise pollution. It can create mental disability, it can create depression, even it can create, if the noise pollution is more and the person is not strong, then that person can be deaf. So we should think about it. We, if we should not create not pollution unnecessary. Of course, other pollution like land pollution, water pollution and air pollution is not in our hands somewhat, because industries are there and many other things are there we cannot control. And if we talk about noise pollution, yes, it is our hand. A citizen we can control. It is not only the work of government has to do everything. Only government has to take the measures. As a citizen you have to take the measures to stop noise pollution, to stop all pollution, especially land pollution. Swachh Bharat Abhiyan, have you heard about this? This is for what? Is the for awareness. Now Modi ji will not come to clean all the places. Is their duty to keep our surrounding clean. As we don't like a dirty home, we don't put dirty thing here and there, we put it in dustbin. While you are traveling in a car, you throw anything out of the window. Why? You should not do this. You are polluting the air and land, as well as polluting the environment. So there is in our hand. As a human can change the condition what is going on nowadays, and even we can control
over disease if we decrease such pollution, right? When the country is pollution free, of course it cannot become a pollution free country or a pollution free place, but we can try it by growing more and more trees, by pleasant environment. Have you visited village? The environment of village is very pleasant because population is less, population is also less, and that the reason why people living in village life a long life. So we should try to control over the pollution. Somewhat it is in the hand of people, somewhat it is in hand of measures to prevent noise pollution. Soundproof system and curtains should be installed in cinema and public halls. Unnecessary noise should be avoided in social occasion, festivals, in a regular फंक्शन एक्सेट्रा। बिना मतलब की आवाज़ करना कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में या फेस्टिवल में नहीं करना चाहिए। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड अराउंड इंडस्ट्रीज एंड एयरपोर्ट्स। फैक्ट्री और एयरपोर्ट के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए। इन द प्लेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, नो हॉर्न साइलेंट जोन रूल्स शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। स्कूल और हॉस्पिटल आदि जगहों में साइलेंस जोन का स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। यूज ऑफ फायर वर्कर्स इन सेलिब्रेशन शुड बी अवॉइड। जो हम फायर क्रेकर्स करते हैं या फटाकड़े जलाते हैं कोई भी फंक्शंस में या सेलिब्रेशन करते हैं तो उसका अवॉइड करना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा शुड बी कीप लो। अगर हम कोई भी रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल्स के साउंड रखते हैं, प्ले करते हैं, वो कंट्रोल में लो वॉल्यूम में रखना चाहिए। मशीन्स एंड व्हीकल्स शुड बी सर्विसेड रेगुलरली। जो मशीन है और व्हीकल्स हैं उनका सर्विसिंग रेगुलरली होना चाहिए ताकि उनसे अननेसेसरी आवाज़ यानी साउंड नहीं निकलना चाहिए। द एबव मेंशन्ड वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग pollute the land, water, air, and sound. In addition to their other activity like satellite launched into the space, vast abandoned by astronauts in the space. In the space, artificial rains with use of different chemicals as well as radioactive pollution due to अनक्लियर पावर ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ ही ये सारे चीज़ें भी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। सम नेचुरल डिस्ट्रेस सच एज वॉल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक, फ्लड्स ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। साथ ही साथ वॉल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक, फ्लड भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। टू मेंटेन द एनवायरनमेंट एंड टू शीप द एनवायरनमेंट, मैन हिमसेल्फ हैज़ टू मेक फार्म रिसोल्यूशन। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए इंसान मनुष्य खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। होप दिस लेसन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।